Friends, जी, it's English lesson time, and today, first of all, we'll repeat the previous letter. Yes, tell me which is this letter. This is letter, yes, C. Letter C having sound k, and this is letter B. This is letter B, and letter B having a belly, round belly, and letter B having sound b. This is letter A. This is called letter A. Good. And this is letter D. This is letter D, and letter D having a tail. This is called its tail. इसे हम क्या बोलते हैं? इसका ही tail. And letter D having sound d 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 d. Okay, G. And this is letter E. This is letter E, and letter E having sound a. This is letter, yes, tell me, this is letter F. F having sound good. And this one letter G, and this one letter H. And now we have a new guest in our classroom, and that is new letter this, and that is letter I. Everyone say welcome to letter I. अब हम सब ने बोलना है letter I को. Welcome to class play group. Okay, welcome letter I. How are you letter I? Let's have some gossip with letter I. Letter I के साथ कुछ gossip करें, कुछ बातें करें, इसका हाल चाल पूछें. Okay, hi letter I. सब बोलो मेरे साथ repeat करें. Hi letter I. How are you letter I? ठीक हो? What are you doing letter I? Are you happy in class in our classroom? Oh yes, letter I is saying I am very happy here. Okay, letter I is very happy here. Now you have to learn its name, and सब मेरे साथ repeat करें. This is letter I. Letter I जो होता है short होता है, और इसके head के ऊपर एक small सा dot होता है. इसे क्या बोलते हैं? Dot. And this is called letter I, and letter I give a sound E. Letter I give a sound E. से मेरे साथ करें E. जैसे आपको बहुत ठंडी लग रही है, आपको कोल्ड लग रही है, आप शिवरिंग कर रहे हैं और आप लेटर आई साउंड की तरह निकाल रहे हैं E. Letter I having sound E. This is letter I. E insects. इन्हें हम क्या बोलते हैं? E insects. These are insects. जो कीड़े होते हैं, इन्हें जो फ्लाइज होती हैं, इन्हें हम सबको बोलते हैं इंसेक्ट्स. दीज आर ई इंसेक्ट्स. ई इंकपॉट. ई इंकपॉट. ई इग्लू. दिस इज कॉल्ड ई इग्लू. इग्लू क्या होता है? जो ये बना होता है आइस का, ये घर बना होता है. ये बहुत टॉप पे जगह बनता है जहाँ बहुत ज़्यादा आइस होती है, बर्फ़ होती है. ये उसका हाउस बना होता है. ई इग्लू. ई इंकपॉट. इंकपॉट में कौन होता है? इंक. जो आपकी टीचर आपके मार्कर में फिल करती है, पेन में फिल करते हैं. ई इंक. सब बोले ई इंक. ई इग्लू. ई इंसेक्ट्स. ई इंसेक्ट्स. एंड ऑल थ्री पिक्चर्स स्टार्टेड letter I. Started letter, yes, repeat with me. Started letter I. E insects. E igloo. E inkpot. E igloo. And now next book, activity book of English, and in this book you have to trace letter I. You have to apply dot on this letter I. This letter I. After tracing letter I, you have to fill color in E igloo. क्या इसका नेम है? E igloo. E igloo. You can use different colors. आप different color भी use कर सकते हैं, one color भी use कर सकते हैं. You will make your igloo beautiful. Now I am going to turn the next page. Okay जी, now you have to check which picture started letter I. Okay जी, repeat कीजिए. E inkpot. Book. E insects. Horse. E igloo. This is igloo. This is horse. These are insects. This is a book, and this is inkpot. E inkpot started letter E I. Book. Book give a sound b, and that is not the sound of letter I. वो तो letter B की sound है. And these are E insects. सब repeat कीजिए. E insects. E insects. Insect started letter I, and this is horse.
horse. Horse started letter H, not the letter I. Now next this is igloo. Igloo started letter I. Yes. Inkpot started letter I, match with letter I. Insects match with letter I, and igloo started with letter I. Now you have to match igloo, inkpot and insects with letter I, and you have to fill color in letter in these pictures. Okay जी. After coloring the picture, you will trace this letter I, and now you have to repeat with me. स्टूडेंट्स, आज हमने क्या लर्न किया है? आज हमने क्या लर्न किया? लेटर I, and this is called igloo, and this is inkpot, igloo, insects, and this is letter I, and letter I having sound e. Letter I having sound e. Okay, now after this lesson you have to repeat all the pictures name, letters name with जो मामा के पास बैठ के अपनी बुक ओपन करना है और सारे अपने लेटर्स के नेम लर्न करने हैं, रिपीट कर प्रीवियस लेटर्स के नेम भी रिपीट करने हैं और ये भी अपने रिपीट करने हैं. ओके, थैंक यू.